Great. Good evening, everyone, and welcome to the second session of The Option is Yours, where for the next few days, expert traders from FNO space will be participating in 5 different sessions lined up for you and demystifying the concepts of option trading. So, talking about today's topic, every day can be payday. We'll be focusing on some useful intraday option strategies for indices and stocks that can help you plan your trades better. Before we proceed, let me read out the disclaimers very quickly. Investment in securities market are subject to market risk, so read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information purpose only and in no way can be considered as an advice or recommendation. Any views and options made during the session by the panelists are their personal expressions and solely belong to them and do not represent those of Paytm Money Limited or its employees in professional or personal capacity unless explicitly specified by Paytm Money Limited. Now, having said that, moving on, let me quickly introduce the host for today, Mr. Aditya Singhania. Aditya is a financial planner at Plan Rich. By qualification, he is a certified financial planner and a qualified personal finance professional. He started his own financial planning firm 4 years ago, but has previously worked with JP Morgan as a consultant and as a senior research analyst in a portfolio management firm. Now he manages more than 20 crores in assets across 25 plus families. He's also an active investor, option trader, and also a poker player. Aditya, can you hear Thank you Aditya? so much, Neeraj. Yeah, Yes. Aditya, the show is all yours. Over to you. thank you so much, Neeraj. Thank you for your kind introduction. So, I would first like to thank Paytm Money for hosting this event and having me as a host. I would like to welcome everyone to Paytm's Money's webinar. The option is yours, where we'll be demystifying concepts around option trading. Today is episode 2, and every day can be a payday. And let me introduce our guest. Mr. Bramesh Bhandari. So, Mr. Bhandari is the CEO of Bramesh Tech Analysis. Bramesh has been a stock trader for in Indian markets for more than 15 years. He uses GAN and ASTO methodologies and shares his insight in forex, commodity, and world indices through his website, brameshtechanalysis.com. He is also an active tutor on technical analysis for traders. Thank you. Welcome, Bramesh. Mm, yeah. Hi all. Thank you very much for your kind introduction, Aditya and Neeraj. And thank you, Paytm Money, for giving this opportunity to, discuss my views on options. So yeah, I mean, so let's get started. Yeah, sure, Ramesh. So I was just having a look at your website and I saw that more than 65,000 traders are subscribed to your newsletter and are benefiting from your analysis, which is really amazing, by the way. Right. So yeah, so let's start with the day. So lot of people joining us will be beginners, right? So I wanted to know. So I'll just start the questions. Okay, from intraday trading. So mainly we are looking at intraday future and options trading, right? So in this, which underlying asset do you generally recommend, stocks or index? And index also we have like many varieties like Nifty, Bank Nifty, and recently Nifty is also getting momentum, right? So what would you say are the advantages of Yeah. index trading versus stock trading? Mm, yeah. So there are various things which we need to consider. When you're trading in options, the first is the liquidity. First is your, slippages if you're trading in huge quantity. But if you're new to Right. the market and you are a retail investor whose capital is less than, I would say, 15 lakhs, I would advise to only trade in index. The reason is very simple. Hmm. I mean, the stocks do give higher returns. I mean, the losses are also high. If you can see the recent episode of Adani. So Right. Adani Ports and Adani Enterprises, these were the two stocks which are in FNO and their options are actively traded. And if someone has bought just let's suppose 1,500 or a 2,000 put of Adani, he would have made almost 20, 30, 40x on that based on Right. Right. where he or she has exited.
But if someone is long in Adani Enterprises and the stock is just hitting, lower circuit to lower circuit, so Hmm. what happens is, you can blow up your trading account very easily. Now, when it comes Right. to indices for the whole year, in worst case scenarios, provided, when the global financial crisis or COVID has come, the markets were down 50%. I'm talking about indices. Because Right. Nifty as an index is made up of 50 plus shares, right? I'm not seeing indices going down like 5-6% a day on a regular basis. I mean, once in a while, it happens, but on an average, Yeah. in a month, it will move between 4 to 5% range. I'm talking about Nifty. So if you are Yeah. a conservative trader who is learning to trade, it's always good to learn everything on Maruti than to directly go on BMW. So when it comes to Bank Nifty, when it comes to stocks, the risk, as the reward increases, the risk increases multifold. So if you're a new trader, I would advise you stick to Nifty. And if you are a little bit aggressive, then go with Fin Nifty as an instrument has been recently, recently it has been brought, and what I've seen is the liquidity is not that great in that. Still, it is tradable, and but the liquidity is not that great. Fin Nifty futures are not so actively traded. The liquidity is an issue. So if you are an Right. option trader, the first thing you should always focus on is liquidity. Your slippages. I mean, the difference between bid and ask. If suppose you're buying at 10 and you're getting a seller at 11 or 12, it doesn't make sense that 1 rupee you're losing in just in slippages. For Nifty options, you will never face that kind of issue. So if Right. you are in, so basically you first decide what is your risk taking capacity. If you are very conservative trader, stick to Nifty. Little bit aggressive, go with Bank Nifty, and you are super aggressive, then go with stocks. So that is Okay. how I, Perfect. yeah, yeah. Perfect. In stock also, mostly I think liquidity you are considering top 10, 20 stocks will have higher liquidity, right? Like in index, Nifty Yeah, and Sensex. stocks like Reliance, all the top 10, the highest weight is Reliance, HDFC Bank, SBIN. They'll have good liquidity. But suppose I want to buy 1,000 lots of Nifty, any options, I can get it within my slippages will not be more than 20-30 paisa. But in stocks, trading in this such big quantities, you can get a good slippages. So that is something which we should always be mindful about. That's true. That's true. And आपने slippage का बहुत ही अच्छा point बताया. Generally, that's a fixed cost every time a person will pay, right, for taking a transaction. Government charges वो सब तो जा ही रहा है, and it's a added disadvantage, right? Slippages That's is amazing. something yeah, that is the most important part because at the end of the day, it's a business, right? जहाँ पे भी Right. पैसा बचा सकते हो, wherever you can save your money, you need to stick to that. So just because brokerage हमारा काम है, I'll just enter Right. here and there. It really doesn't make sense. And the more random trades you do, the less profitable you will be. That's true. एंड ऑडियंस को मैं और एक चीज बता दूं, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है यू कैन ड्रॉप देन. हम ट्राई करेंगे Q&A जैसे एक बेसिक वाला हो जाता है, उसके बाद सारे के सारे हम क्वेश्चंस आस्क करते हैं, ठीक है? सो चलिए रमेश भाई, वील गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो एस शुड इंट्राडे ट्रेडर्स फोकस ऑन ऑप्शन सेलिंग एज वेल? सो जनरली आजकल बहुत ही कॉन्फ्रोवर्सी हो रही है कि मतलब ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, और खासकर अभी जैसे विक्स लो है तो ऑप्शन सेलिंग के प्रीमियम्स भी कम होते हैं, राइट? सो मतलब और दोनों में से कुछ भी करते हैं तो प्रिकॉशंस क्या हमें लेने चाहिए, राइट? ऑप्शन सेलिंग क्या ये टाइम पे स्पेशली लो प्रीमियम्स पे सेंसिबल है? See, there is a time to buy option, there is a time to sell options, right? And राइट. and it depends a lot on your the setup which you follow. Even the VIX is low, it doesn't mean that you cannot write options. I mean, अभी भी आपको अच्छा मतलब premiums are not that great because if you've seen an environment where VIX is 20, 30, 20 plus, then definitely the premiums are quite huge. But now the VIX is low, so yeah, अब see देखिए, I will never advise anyone to do naked buying or selling in options. Always राइट. create spread so that you know your risk is under control. Spread is basically एक higher option लिया उसके नीचे वाला बेचा. You can create lot of things, but never ever do. If you are a new trader, you because see now the thing is it's not only humans who are trading. It's algos, it is machines which are trading. राइट. Now when machines are trading, अभी बहुत time आप देखेंगे. I think लास्ट एक्सपायरी में हुआ था, मंथली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी 4 रुपए का ऑप्शन. It was just it went to just 200, 300 in matter of 2 or 3 minutes, राइट. and it was राइट. again राइट. back to 4 rupees. As a person, as an individual, as a normal retail trader who is not a full-time trader, it's highly impossible for you. अभी hindsight में मैं बोल तो देखो 4 पे लेते मैं 100 पे निकल जाता वहां पे मैं शॉर्ट करता. So these kind of things always work on paper, but in real राइट. sense when your money is involved, when your emotions are involved, when you don't get an exit. अभी 4 रुपए का ऑप्शन आपने बेचा है because lot of people think 2-4 रुपए वाले ऑप्शन बेच दो
and Right. they will expire वो worthless. guaranteed And return है. Right. yes, guaranteed. There is nothing called guaranteed. I mean, that is how Right, it has right. been put up. But जब अगर कुछ भी guaranteed है वो आपका एफडी का रिटर्न है जो 8% है जो अभी चल रहा है उसके अलावा कुछ भी guaranteed नहीं है. There is no free money lying anywhere in the market. If you make 3-4 trades like this, the big players are making a habit of you हर बार बेचो और कई बार देखो. I think last monthly expiry में Nifty puts which were 5-10 rupees at 3 o'clock at 3:15 they were trading at 50 Right, 60 rupees, right? right, So option selling, even option selling, option buying, you need to have a correct setup. And definitely when the VIX is increasing, when VIX is increasing, देखिए VIX ऊपर से नीचे आ रहा है तब option selling more advisable रहती है. जब VIX increase होता है तो you should go for option buying. और जब भी 10-12 के आसपास VIX आ जाता है तो avoid doing option selling because one instance and the VIX will just pop up और तब आप opportunity का you go for right, option right. selling. Right. So प्राइसिंग मतलब रिस्क की एकदम परफेक्ट हो जाती है, राइट? सो देयर इज अ वेरी correct. लेस गैप बिटवीन गेटिंग रॉन्ग. एंड वन मोर थिंग, आई थिंक आपने एडवाइस किया स्पेशली एक्सपायरी ट्रेडिंग पे. एवरेजिंग जो पीरियड होता है 3 o'clock के आसपास, इट कैन बी वेरी ब्रूटल. वो टाइम पे उससे पहले अगर ज्यादातर व्यूअर्स जो है एग्जिट कर देंगे तो बेटर रहता है, या तो फिर स्टॉप लॉसेस सिस्टम में होने चाहिए फॉर श्योर, राइट? और Correct. वन की लर्निंग आई वुड टेक इज, आपने जो बोला कि आप स्प्रेड्स में काम करिए यानी हेज लेके चलिए. बेसिकली हेज इज योर एज इन द मार्केट. उसके बिना अगर आप काम करेंगे तो काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, राइट? या Yes, and that is you will learn because hedging is very important in two instances. First is कि आपको exchange will give you margin benefit. That is one thing. Second thing is you राइट, will not go bonkers. अभी Adani Enterprises fell down from 4,000 to almost राइट, 1,100. In matter of few days. आप एक भी राइट, फ्यूचर आपका हो जाता आप फ्यूचर के साथ पुट को लेके चले उसमें कुछ तो आपको प्रॉफिट राइट, देगा. यू विल नेवर गो बस्ट इन द मार्केट बिकॉज यहाँ पे इट्स जस्ट लाइक इन बिजनेस. बस यू डोंट हैव टू गो बस्ट और एक ना एक दिन चौके चक्के मारने के लिए मिल जाएगा आराम से. राइट. अडानी में तो स्ट्राइक्स भी खत्म हो गए थे, राइट? जब लोअर सर्किट लग रहा था, नेक्स्ट हाँ स्ट्राइक्स भी नहीं उसको थे. हेज ओपन कर इतना देते ब्रूटल हैं. हो गया. हाँ that was one of the instances these kind of things comes once in a while. पर हमें उसपे I mean अगर hedge होगा तो at least you will not lose your shirts and pants. Perfect. So moving on to our next question. So how do you decide your entry and exit? And मतलब जो इंट्राडे बेसिस पे आप अपने पोस्टल सेटअप्स करते हैं, आपके हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस का क्या रोल प्ले होता है मतलब इंट्राडे बेसिस पे? या सी देखिए क्या होता है. सी एट द एंड ऑफ द डे अभी आपने एक वर्ड यूज किया था hedge is an edge. What is an राइट, edge? Edge is an educated guess. You know. राइट, Now what I see abhi I want to enter a trade. Okay, now I need to have certain criteria. So when it comes to trading and when you are the only one who is the boss here, I mean you are your own boss and you see prices going up and down, your mind will start playing around with you कि नहीं यार अभी buy कर लेते अभी sell कर देते. And generally जो भी आपका mind बोलेगा उसका opposite ही होता है. You want to buy वहीं पे top बनता है वहीं से market गिरता है जहाँ आप sell कर रहे हैं. I'm talking about a typical retail trader. राइट, So we need to have a certain conditions, certain setups. जैसे आज जैसे ये हमारा सेशन था. We have decided 5 o'clock पे होगा and everything. So everything is decided. What we will be discussing. There is no randomness which is involved. So when it comes to राइट, trading, also you need to have that. You need to avoid this randomness, and that randomness can only be avoided when you have certain set of rules. Okay, I will enter at this point. This is my stop loss. This is my exit. Now, I mean, there can be a lot of setups. A simple setup which anyone can use is आप नॉर्मल एक 5 मिनट्स के चार्ट पे कोई भी ऑप्शंस का है उस पर एक ओपन इंटरेस्ट लगा लीजिए. एक 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन लगा लीजिए. एंड जब भी वो ऑप्शन उसके ऊपर जाता है तो जनरली यू विल सी सम गुड मूव इन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन. नाउ दिस इज समथिंग इट डजंट वर्क ऑल द टाइम. इट वर्क्स लाइक 60-70% ऑफ द टाइम बट यू हैव ए गुड एज इन राइट, इट. सो दैट इज अ वे. आई मीन ऐसा नहीं कि 9:15 पे मार्केट खुला कुछ भी ले लो कुछ भी बेच दो ऐसा नहीं होता. राइट, You need to stick to certain rules कि ये मेरा rule है. This is my entry, this is my exit, and this is my stop loss. When it comes to options, what happens is most of the traders who trade in options, they are typically having a capital of 2 to 3 lakhs on an average. This was published in SEBI report also कि 2 से 3 लाख की कैपिटल होती है. And everybody thinks कि मेरा क्या है 4 रुपए का ऑप्शन लेंगे उसको 10 में बेचेंगे and all that stuff. Now राइट, the options is one of the most sophisticated instrument which has been ever made. And they were राइट, practically made to hedge your portfolios, to hedge your open position. They were not made for trading. But the markets have changed as they change. You we also change accordingly. So options में
आप कोई भी सेटअप पे फोकस करें, मेक श्योर दैट इफ यू आर ट्रेडिंग नेकेड यू नीड टू हैव स्टॉप लॉसेस इन द सिस्टम। एंड जैसे मैंने अभी आपको 200 डे मूविंग एवरेज का एक सिंपल सा दिया, वो भी लगाएंगे तो उसमें आपको एक प्रॉपर एंट्री, कई बार एंट्रीज नहीं मिलती अगर मार्केट ट्रेंडिंग चलता है, पर जब भी हमें एंट्री मिलेगी हम उसके हिसाब से कर सकते हैं। राइट, सो बेसिकली सिंपल टर्म्स में बोले तो राइट सेटअप्स का वेट करें एंड रिस्क रिवॉर्ड को यू नीड हमेशा टू हैव देखें। सेटअप। बस राइट फर्स्ट थिंग इज आपके पास एक सेटअप होना चाहिए जिसपे आपके पास कन्विक्शन हो। अभी जैसे मैंने राइट 200 डे का बताया, आप इसको देखेंगे 10 में से 4 बार नहीं चला, 6 बार चला। जब 4 बार राइट, चला, वो चारों टाइम आपने ट्रेड लिए थे, 6 बार नहीं चला, तब तक आपका कॉन्फिडेंस ही चला गया। राइट, सो सही उसको बात। पहले ऑब्जर्व कीजिए एटलीस्ट 41 डेज, कोई भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हैबिट बन जाता है ऑन एन एवरेज। सो हाँ आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, कन्विक्शन डेवलप कीजिए, कन्विक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली जब जब एंट्री आएगी तो आपका बटन, हाथ पे बटन दबेगा, बाय का बटन या सेल का बटन जो भी दबाना है बेस्ड ऑन द सेटअप वो होगा, एंड देन यू स्टार्ट इवॉल्विंग एज अ ट्रेडर। राइट, परफेक्ट परफेक्ट थिंग। सो आपका मेरे को पर्सनली जानना है रमेश भाई कि व्हाट्स योर फेवरेट ट्रेडिंग सेटअप फॉर ऑप्शंस, और इंट्राडे में आप मतलब एक ऐसा सेटअप जो आप हर बिगिनर को रेकमेंड करेंगे, या आपका कोई भी एक फेवरेट सेटअप हो। देखिए, एक सेटअप बहुत ही बेसिक सेटअप है बट इट वर्क्स रियली नाइस। आप सिंपल एक वीवा की लाइन लगा लीजिए, राइट, राइट फॉर द डे, और वीवा के ऊपर जाना तो लॉन्ग कीजिए। आई मीन आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज चार्ट से और अच्छा समझा सकते थे, पर वीवा आई थिंक राइट एवरीबॉडी नोज एट द एंड राइट ऑफ द डे ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये सारे सेटअप वीवा, बिकॉज लॉट ऑफ एल्गोस यूज दिस पर्टिकुलर सेटअप, तो आपको कई बार दिखेगा प्राइस वहां से जाती है। जैसे आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर टुडे, आज अडानी एंटरप्राइजेज एकदम बड़ा था, फिर 1575 जब उसका सर्किट खुला तो 1575 से वो एकदम नीचे आया था। इट एग्जैक्टली राइट टुक सपोर्टेड वीवा एंड फ्रॉम देयर अगेन इट गेव अ रैली। So what I'm saying is institutions, algos, they use this particular event a lot, particular VWAP a lot. आप भी इसका यूज कीजिए, अगर इंस्टीट्यूशन पैसा कमाएंगे तो आप भी उसके साथ बैठ जाओ तो आप भी कमा लोगे, you know? राइट 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 राइट, परफेक्ट। आई थिंक मतलब जहाँ पे इंस्टीट्यूशन से हमें मतलब डायरेक्शन से फाइट नहीं करना है, वेब के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर VWAP रहा है will तो इट्स always ओके। give you the right direction, right? राइट If you are an option seller, तो आप क्या करें, VWAP के ऊपर चल रहा है तो उसके नीचे के दो स्ट्राइक प्राइस नीचे वाले ऑप्शन को सेल कर दीजिए, और उसके दो स्ट्राइक प्राइस नीचे वाले को बाई कर लीजिए, तो आपका एक स्प्रेड भी बन जाएगा। यू हैव योर रिस्क इन, अगर वो 200 पॉइंट का जो आपका रिस्क है वो भी आप ऊपर का कोई कॉल बेच के भी बराबर कर सकते हैं। तो बट अ वेरी राइट टिपिकल बेसिक सेटअप आप कर सकते हैं, एंड यू नो सिंपल थिंग्स वर्क्स इन द मार्केट, वी डोंट हैव टू मेक थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल, यू विल ओनली गेट कंफ्यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। वीवेप हमेशा आई थिंक मतलब कैसा होता है कि जिस दिन कंसोलिडेट होता है उस दिन पे कभी कभी धोखा दे देता है, बट ट्रेंडिंग डे ये कभी मिस धोखा नहीं नहीं है कराता है। actually। देखिए, हाँ हाँ, धोखा नहीं होता है। अगर मार्केट आपको पैसा देगा तो थोड़ा आपको मार्केट को देना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है राइट कि आप राइट देते जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट राइट धोखा, इट्स अ बेसिक थिंग दैट वी सी। द थिंग इज हाउ यू नो, दिस इज अ टिपिकल थिंग विद लॉट ऑफ पीपल टॉक टू मी कि आज हमने यूज किया, आज नहीं चला, जब हम यूज करते राइट हैं राइट राइट so market will test you. There is no free money lying here. And if you are राइट राइट making money, then someone is losing money from you. So typically, अगर आप पैसा कमाते हो तो आपको थोड़ा देना भी पड़ेगा मार्केट को. And that is where राइट the risk management comes in place. So, राइट or you need to change. I mean, whoever. I mean, I also had the same problem, and the only thing is it's just change of perspective, the narrative. It's not loss which you're doing. It is just your, you know, you're protecting your पार्ट ऑफ capital. सेटअप है। राइट राइट Yeah, राइट that is part of the setup. There is nothing called holy grail कि भाई ये तो हर टाइम ही मुझे प्रॉफिट ही देगा। वो आपको एक महीना 2 महीना दे देगा कि the thing is the markets are very dynamic in nature. जो चीज 2 दिन पहले चल रही थी, आप जैसे देखिए 200 डे मूविंग एवरेज इज कंसिडर्ड एज वेरी sacrosanct line. राइट You know, if for the indices. अब मार्केट आपको कैसे धोखा देता है? अभी जैसे कल तो निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ दिया था, तो यू नो द ट्रेंड वाज नियरली बेरिश। पर आप उसका निफ्टी का अगर आप सेंसेक्स देखेंगे तो उसने अभी तक 200 डे को होल्ड करके रखा है, आज गैप अप दे दिया, थोड़ा सा नीचे लगा, पूरा मार्केट खींच लिया, हो सकता है कल वापस गैप अप हो जाए। सो मार्केट विल ऑलवेज फाइंड वेज टू ट्रैप द पीपल, यू नो, ट्रैप अ राइट ट्रेडर। तो आपको उससे कैसे बचना है वो इम्पोर्टेंट है। तो these small basic things will always help you out in making sure that you are never at the wrong side of the market. अगर wrong side राइट में होंगे तो minimum loss से निकल जाएंगे। Once your राइट, capital is protected, you can always play the next game. दैट इज सच अ गुड आंसर रमेश भाई। सो वीवेप के साथ हम आप हमेशा मतलब राइट डायरेक्शन में रहोगे, दैट इज फॉर श्योर। जो बोलते हैं जिस कोई वो आपको वीवेप आई थिंक आपको डायरेक्शन मिस नहीं होने देता, राइट, दैट्स द बिगेस्ट प्रोटेक्टर। डायरेक्शन 200 डे मिस भी नहीं होने देगा, बहुत सारी चीजें आपको डायरेक्शन मिस नहीं होने राइट, देगी, राइट? दैट्स तो राइट you know, at the end of the day,
द कन्विक्शन, जब तक कन्विक्शन नहीं रहेगा, कन्विक्शन नहीं होगा, तब तक कुछ भी चीज नहीं चलेगी. Right, right. So, Conviction and the next important thing is trading with a fearless state of mind. कभी right, फियर में आप काम करोगे, अरे मेरे को पहले नुकसान लग गया, मैं अब नया पोजीशन लूं नहीं लूं, फियरलेस होना चाहिए. यू नो, जब वो right, फियरलेस right. स्टेट ऑफ माइंड डेवलप होगा, तब आप बड़ा काम कर पाएंगे मार्केट में. परफेक्ट ब्रह्मेश भाई, परफेक्ट. सो आपका ये देखिए, अभी आपका अप्रोच क्या होता है, जैसे स्पेशली अभी जैसा आपने एक सिंपल सेटअप बताया, मुझे ये भी जानना है कि ये मार्केट जो है आजकल बहुत वॉलेटाइल हो गया, राइट, स्पेशली क्लटरी प्राइस एक्शन हो गया. सो एज अ इंट्राडे ट्रेडर, ये हाईली वॉलेटाइल मार्केट की तरफ आपका अप्रोच कैसा है? देखिए, मार्केट क्लटर ही नहीं हुआ है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज कॉल्ड एज अ टाइम करेक्शन. Now we ओके. had some 2 to 3 good years. कोविड के बाद मार्केट बहुत अच्छा चला. 2021 में भी अच्छा चला. 22 में थोड़ा बहुत वोलेटाइल हुआ है. अभी 23 तो अभी चालू ही हुआ है. तो मार्केट एक रेंज में आ गया है, और रेंज में ऊपर भी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है. तो ऐसा होता है. नाउ अभी क्या होता है कि जैसे लाइक आई टोल्ड यू, मार्केट विल नॉट कभी ट्रेंडिंग. जैसे 2020 में तो प्योर ट्रेंडिंग मार्केट. अब उस टाइम ट्रेंडिंग मार्केट था, तो हर जना बोलते हैं नहीं शॉर्ट करो, ये तो मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है. अभी मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, तो कभी आप लॉन्ग जाना पड़ता है, कभी शॉर्ट जाना पड़ता है. यू नीड टू बी वेरी अडेप्टेबल, राइट. एज द मार्केट कंडीशंस आर चेंजिंग. नाउ अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा कि इतने वोलेटिलिटी में आप कैसे करते थे, कि वोलेटिलिटी में करने का तो एक ही सिंपल सा रीजन है कि भाई जो आपका ट्रेड सेटअप है, जैसे मैं 200 डे को फॉलो करता हूँ. आई फॉलो अदर वेरियस टेक्निक्स विच गैन एंड एस्ट्रो टेक्निक्स विच गिव अस सम स्पेसिफिक डेट्स जिन पे हमें वी कैन एक्सपेक्ट सम रियली गुड मूव्स इन द मार्केट. लाइक निफ्टी वाज फॉलोइंग फ्रॉम 9 days in regular till yesterday. तो 9 और 5 का एक गैन का प्रिंसिपल होता है कि 9 डेज अगर कोई भी चीज गिरती है तो 5 दिन बढ़ती है. तो वी वर एक्सपेक्टिंग सम ग्रीन मूव टुडे एंड व्हिच हैपेंड. हो सकता था और भी नीचे चले जाए मार्केट. तो इट्स पार्ट एंड पार्सल. देयर इज नथिंग कॉल्ड होली ग्रेल. तो ऐसे मार्केट्स में आपको पैटर्न्स पे काम करना पड़ता है. यू नीड टू लुक एट पैटर्न. यू नीड टू लुक एट लास्ट एक्सपायरी कैसा हुआ, वो ग्रीन में हुआ, अभी हम उसके ऊपर चल रहे हो तो एक्सपायरी लेवल के ऊपर ही, तो हो सकता है मार्केट ऊपर के साइड पुश करेगा. एंड मोर इम्पोर्टेंटली जब ये वोलेटाइल सेटअप हो जाते हैं, दिस इज द बेस्ट टू क्रिएट स्प्रेड्स, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ही अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर पाएंगे. राइट, राइट. एंड होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है सेटअप में, राइट. राइट. मतलब विक्स कम है, तो आपको जो मूव आपको एक दिन में मिल रहा था 20 के विक्स में, आपको 300 पॉइंट का मूव, निफ्टी का मूव एक दिन में मिल जाएगा. अभी उसको 2 से 3 दिन लगेंगे. पर दैट इज हाउ इट इज. जैसा मार्केट है वैसा आपको अडेप्ट करना पड़ेगा. आप अडेप्ट नहीं करोगे तो कैपिटल लॉस होता है, आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे. That is so true. तो ब्रह्मेश भाई, इससे मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. आपने जैसा बताया कि 2 to 3 लाख से जनरली कैपिटल एक एवरेज ट्रेडर का होता है, राइट. सभी का रिपोर्ट भी आया, ये था. सो अभी ऑप्शंस हो स्पेसिफिकली, तो उसके अंदर काफी कम कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, स्पेशली बाइंग के अंदर. सेलिंग के अंदर भी निफ्टी में देखिए 1-1.5 लाख में एक नेकेड कॉल या पुट सेल कर सकते हैं हम, जो है. और अगर ऑप्शन बाइंग की बात करें तो काफी ज्यादा, मतलब वी कैन डू. अभी निफ्टी का रियल वैल्यू होता है 9 लाख, बट आप एक ऑप्शन सेल कर सकते हैं 1-1.5 लाख रुपए में. ऑप्शन बाइंग डिपेंडिंग ऑन द स्ट्राइक, आप तो काफी ज्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, राइट. सो आपको लगता है कि इसके वजह से कोई एक हम ट्रेड लेते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब इसके वजह से? देखिए, ऑप्शन बाइंग का क्या है, 4 रुपए की चीज ली 8 पे निकाल दे, 100 रुपए की चीज ली 200 पे निकाल दे. नाउ इफ द एंट्री बैरियर्स आर वेरी लेस इन ऑप्शन बाइंग, बट द प्रॉब्लम विद ऑप्शन बाइंग इज यू नीड टू बी एक्सट्रीमली एक्यूरेट विद योर व्यू. जैसे मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, दैट इज माय व्यू. नाउ if I'm an option buyer and I think the market will go up 200 points, that is the view I've created for the next till this expiry. और उसके हिसाब से मैंने let's suppose 18,000 कॉल 50 रुपीज से मैंने ले लिया. नाउ बाय द लास्ट थर्सडे, जो वीकली का अगर मैंने ऑप्शन लिया, थर्सडे को 18,000 आ जाता है, पर तब तक मेरा प्रीमियम पूरा इरोड हो जाता है. I was right in my view, but I was wrong with my timing. So if you're an option buyer, your timing should be extremely precise. You cannot be wrong with your timings. And if you're an option seller, then timing really doesn't matter. Only thing is कि VIX आपने सेल किया, उसके बाद बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाना चाहिए, and then you can easily make money. So जिसमें entry barrier less होता है, that is something most of the institutions what they will do, they will have professional traders who will mostly prefer an option selling. उसका रीजन क्या होता है कि they create a brand. अभी आप कोई भी देख लीजिए, निफ्टी का भी या बैंक निफ्टी का भी ब्रांड होता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, जैसे अभी जो लास्ट मंथली एक्सपायरी हुई थी, 18,000 कॉल ऑप्शन वाज हैविंग द हाईएस्ट ओवर. मार्केट थोड़ा उसके ऊपर जाता था, फिर नीचे आ जाता था, बिकॉज दे वर हैवी सेलर्स देयर एंड दे डिड नॉट वांटेड टू मार्केट टू गो. पर अगर आपने 18,000 फुट को बाय किया
एंड उसके बाद एक दो दिन मार्केट एकदम कंसोलिडेट किया, फिर एक ही दिन बहुत बड़ा गिरा, अब उन 2 दिन में आप हताश होकर निकल जाते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। So option Right. buying में, if you want to be successful, you need to be very clear with your timing. Option selling में you have the luxury of, even if your timing goes wrong, even if your view goes wrong, you can repair your positions. But option selling में आपका entry barrier high होता है। High इसलिए ही होता है क्योंकि वहाँ पे institutions काम करते हैं। Low इसलिए किया जाता है कि कोई भी buy कर लेता है, the institutions will make money out. Right. Right. Right? Perfect. Right. So ये चीज आपको समझनी पड़ती है। एंड हैविंग सेड दैट, नाउ विद दिस एक्सचेंज जो लास्ट एक दो साल से एक्सचेंज ने किया है, यू कैन इवन बाय फ्यूचर्स, यू कैन बाय फ्यूचर्स विद इन द मनी, स्पेशली ऑन एक्सपायरी। कल एक्सपायरी आप ट्राई कर लेना कि आप एक फ्यूचर ले लीजिए निफ्टी फ्यूचर्स का, विच इज टिपिकली 1 to 1.5 lakhs, एंड टेक द वन Right. स्ट्राइक प्राइस बिलो इन द मनी ऑप्शन। तो आपको टोटल मार्जिन ही 25,000 रुपए लगेगा, और उससे आपका मैक्सिमम लॉस होता है 1,200 to 1,500 rupees on Nifty futures 1 lot. These simple techniques which you have to practice and get it done. तो आपको एक अच्छा एक you can create a जैसे फ्यूचर और इंडेक्स का एक hedge Spread position हो हो गया, गया. spread हो हाँ. गया फ्यूचर विद ऑप्शन, and if the market goes in direction, you can make a very good money. 25,000 पे कई बार you can easily make 5 to 10,000 also. It doesn't happen Right. every time, but here the losses are always different. So that is the biggest Right. advantage here. So you should always be an option buyer, option seller, depending on the market conditions. But option buying just because कोई प्रीमियम बहुत छोटा है आप ले लिया, एक दो बार तुक्का चलेगा, पर हर बार नहीं हो सकता। सही बात है। सो इससे मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है। सो अभी ऑप्शन बाइंग जो है 90% ऑफ द ऑडियंस ड्यू टू कैपिटल कंस्ट्रेंट्स सब प्रेफर करते हैं, राइट? इसके अंदर आपने भी बोला कि सर्टन मार्केट्स आर गुड फॉर ऑप्शन बाइंग, सर्टन मार्केट्स आर गुड फॉर ऑप्शन सेलिंग। सो ज्यादातर जन क्या करते हैं कि चीपर ऑप्शंस खरीदते हैं, जैसे ओटीएम के होते हैं। सो राइट टाइम क्या होता है विक्स के हिसाब से आपका, या तो फिर एट द मनी, एटीएम, आईटीएम या ओटीएम, कब ऑप्शंस प्रेफर करना चाहिए? कौन से जन को मतलब बोलते हैं ना विक्स के हिसाब से ये सब चीजें चेंज होती है, या मतलब इन जनरल सब बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग में इन द मनी लेते हैं तो थीटा डीके कम होता है, कि जनरलाइज्ड रूल है आपके हिसाब से? करेक्ट। देखिए, अगर विक्स अगर बढ़ रहा है तो ओटीएम ऑप्शंस विल गिव मोर रिटर्न्स एज कंपेयर टू द इन द मनी ऑप्शंस, बिकॉज अगर टिपिकल एग्जांपल 1 February मार्केट्स वर अप ऑलमोस्ट 18,000, और बाय द एंड ऑफ द डे दे फेल डाउन 700 पॉइंट। पर अगर उस टाइम आपने 18,000 सॉरी 17,100 200 का पुट ऑप्शन ले लिया होता, तो इट वाज गिवन यू मल्टीपल रिटर्न। 16 रुपए का ऑप्शन 57 तक भी चला गया था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। बट द मिनिमम, बट जैसे मार्केट रिकवर हुआ, फटाफट उनका प्रीमियम भी जो तेज, जितनी तेज बढ़ती है उतनी फटाफट गिरती भी है। सो इफ यू आर टिपिकल रिटेल ट्रेडर, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप इन द मनी या एटीएम में काम करो। तो वहां पे जैसा आपने बोला कि आपका टाइम वैल्यू बहुत कम होगा, मतलब एटलीस्ट यू विल नॉट लूज योर टाइम वैल्यू सो इजीली। अगर ओटीएम में करोगे, ओटीएम में यू नीड टू बी वेरी क्लियर, जैसा अडानी में हुआ कि भाई वो इतना बड़ा गिरेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना वो क्या होता है, वो 10 में से एक दो बार चलते हैं, बट जनरली टिपिकली आप फिर आप नुकसान करके ही निकलते हैं। सो हियर द टाइमिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इफ यू हैव ए क्लियर कट टाइमिंग कि भाई इस दिन से मार्केट इतना होना चाहिए, तो आप ओटीएम में लेके यू कैन मेक सम वेरी डिसेंट मनी देयर, बट दैट कैरीज विद एन एडिशनल रिस्क। और अगर आप एक परफेक्ट। नॉर्मल इन द मनी एटीएम इज व्हाट आई वुड एडवाइस एवरीवन कि इन द मनी एटीएम में करिए, एटलीस्ट यू डोंट हैव द रिस्क ऑफ, बिकॉज क्या होता है टिपिकली ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट कोई स्ट्रेटेजी बता दी और कर लिया, ट्रेडिंग इज अबाउट योर माइंडसेट, दैट इज व्हाट प्लेज अ मेजर रोल। आपने कोई ओटीएम ऑप्शन लिया, लेट सपोज यू बॉट इट 20 राइट। रुपीज, 20 रुपीज वाला 10 रुपए आ गया, आप सोचेंगे चलो दिस इज टिपिकल हैबिट ऑफ एनीवन, राइट। नो वन वांट्स टू कट देयर पोजीशन इन लॉस, चलो एवरेज कर लेते हैं 10 रुपए पे। आपने 10 रुपए पे एवरेज कर लिया, वो 10 रुपए जीरो हो गया, आपका पूरा कैपिटल या वॉट एवर कैपिटल यू हैव डिप्लॉयड इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड हैज गॉन फॉर अ जीरो, हैज गॉन फॉर अ राइट। लॉस। इसका ये मतलब नहीं कि ऑप्शन सेलिंग आपको भी एट टाइम प्रॉफिट देगी, उसमें भी बहुत नुकसान लगता है। किसी ने टिपिकली आज निफ्टी में किसी ने कॉल ऑप्शन को सेल करके रखा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेल करके रखा है, 500 पॉइंट बढ़ गया, तो उतना नुकसान तो आपको देना पड़ेगा। तो देयर इज नो सही फ्री बात। लंचेस, whether you are an option buyer, option seller, your risk management plays a very very vital role, whether you are a buyer or a seller. दैट्स सो ट्रू। सो अभी सपोज अभी रमेश भाई मेरे को ये बताइए, अभी एक पर्सन जो है सपोज एक बिगिनर है, 50,000 के कैपिटल से स्टार्ट कर रहा है, राइट? आपने बोला कि उसको रिस्क मैनेज करना चाहिए। सो आपके हिसाब से कोई एक 50,000 या लाख रुपए फॉर दैट मैटर कैपिटल से अगर स्टार्ट कर रहा है, तो उसका पर डे का ऐसा लॉस का लिमिट होना चाहिए, या उसका बोलते हैं ना कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में उसको डील करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग सेलिंग नहीं, कुछ देखिए भी हो? सबसे पहले एक बेसिक थंब रूल आप फॉलो कर सकते हैं, इफ यू आर हैविंग ए कैपिटल ऑफ 1 lakh, कि भाई आई शुड नॉट लूज मोर देन 2% ऑफ माय कैपिटल ऑन एनी गिवन डे।
2% ऑफ माई right, कैपिटल, मतलब 2,000 रुपए का से ज्यादा का मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। अब 2,000 रुपए से यू हैव डिफाइंड, बिकॉज वाई 2,000, एटलीस्ट यू गेट 50 days टू प्ले अराउंड। मतलब कुछ भी right, नहीं हुआ, एटलीस्ट 2,000 का नुकसान करते करते भी 50 तो नहीं होगा, मतलब अराउंड 40 to 44 days इफ यू कंटिन्यू लूजिंग 2,000 रुपीज एवरी डे, राइट, एटलीस्ट right, फोर्टी right, फोर डेज 1.5 मंथ आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। पर अगर आपने 1 लाख के कैपिटल में एक बहुत बड़ी रिस्क ले ली, तो फिर तो आपका विद इन 2 to 3 days यू कैन गो फॉर अ टॉस, और अ डे ऑन बजट डे यू कैन गो फॉर योर कैपिटल कैन गो टू जीरो इन अ सिंगल डे, राइट। तो right, right, अब इसमें क्या कर सकते भाई, 2,000 रुपीज का रिस्क है, कितने कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं कि भाई सपोज टिपिकली अगर आपने 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा है, of whatever mm-hmm. options you have bought. So you divide 2,000 by 40, you will get around 50. So that is you can trade with one lot. मतलब जो भी आपका right, रिस्क अमाउंट है और जो भी आपका स्टॉप लॉस अमाउंट है उसको डिवाइड कर लो, you will get a quantity, भाई इतनी क्वांटिटी में आप काम कर सकते हो, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एटलीस्ट यू विल नॉट गो bonkers, you will not go lose your whole trading account in matter of few days. At least you will give yourself a chance to be in the market. तो ये so बेसिकली एक सिंपल टिपिकल मैनेजमेंट का रूल है, मतलब पोजीशन साइज रिस्क मैनेजमेंट। अभी ओटीएम में क्या प्रॉब्लम होती है कि आप 2,000 का रिस्क, आप बड़ी बड़ी रिस्क ले लेते हैं, एंड देन इट right, बिकम्स, इट डजंट बी अ ट्रेडिंग, वो फिर एक गैम्बलिंग बन जाती है, क्योंकि वहां पे आप पूरा स्पेकुलेशन कर रहे हो, सट्टा खेल रहे हो, कभी बढ़ेगा right, कभी घटेगा, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में करते हो, आपका एमटीएम 1 लाख का प्लस 1 लाख भी हो जाता है, प्लस 2 लाख हो जाता है, माइनस 1 लाख हो जाता है, तो दैट इज right. नॉट ट्रेडिंग। फिर उसमें क्या होता है, यू स्टार्ट डैमेजिंग योर मेंटल हेल्थ, व्हेन यू स्टार्ट डैमेजिंग योर मेंटल हेल्थ, देन अभी आप पैसा कमा के अपने शरीर का ध्यान नहीं रख सकते, तो फिर वो पैसा क्या काम That is so true and such a logical answer. Yeah. करेगा। So I completely agree. So चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. So अभी बेसिकली अभी कोई भी पर्सन अभी जैसे ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो, डायरेक्शनल ट्रेडिंग में काफी जन प्रेफर करते हैं, राइट? मतलब एक लेग को मतलब सिंगल डायरेक्शनल बेट होती है, सिंगल लेग जो ट्रेड होता है उसके अंदर आपके हिसाब से टिपिकली रिस्क रिवॉर्ड किसी को कैसे मेंटेन करना चाहिए, या तो बोलते हैं ना उसमें स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना चाहिए किसी को, अगर सपोज कोई 50 या 100 रुपए का प्रीमियम खरीद या बेच रहा है, सो हाँ, देखिए क्या होता है, आपको एक चीज समझनी है कि मार्केट मूव्स इन साइकिल्स, राइट। राइट, नाउ अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था अभी हम बहुत वोलेटाइल मार्केट में चल रहे हैं, राइट। राइट, 2020-21 में क्लियर ट्रेंडिंग मार्केट्स, मार्केट से ऊपर जा रहा था, या फिर 22 में जो करेक्शन हुआ अक्टूबर के बाद थोड़ा नीचे गया। नाउ अभी क्या हो गया, जब मार्केट टाइम करेक्शन में चले जाता है, व्हिच इज टिपिकली कॉल्ड एज साइडवेज प्राइस एक्शन, वेयर मार्केट्स आर द प्लेयर्स आर डिसाइडिंग व्हाट कुड बी द नेक्स्ट पोटेंशियल मूव ऑफ द मार्केट, राइट। तो उस केसेस में आपको यू शुड व्हेन द मार्केट्स आर क्लियरली ट्रेंडिंग, तो आप आराम से स्प्रेड बना के करो, on that you can create a spread, you can short and in the money options and buy an OTM option, तो when the market direction is very clear to you। अभी ये वोलेटाइल मार्केट में तो ना आपको ना ऊपर का पता है ना पीछे, आज हो सकता है मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर है, कल वापस 100 पॉइंट नीचे आ जाए, we don't know because markets are not having a clear trend as of now। when there is no clear trend, then always good to go with strangles or straddles, two leg strategy, वो आपको बेनिफिट करती है। और आपने जो रिस्क मैनेजमेंट का पूछा, तो मैंने बोला कि आप 2% ऑफ ए कैपिटल का रिस्क दो। अब सपोज इन ए डे यू टेक टिपिकली 2 to 3 ट्रेड्स, देन यू शुड राइट, नॉट रिस्क मोर देन 1,000 रुपीस पर ट्रेड, व्हिच राइट, इंक्लूड्स बोथ द लेग्स। इफ यू आर डिप्लॉइंग ए 2 लेग स्ट्रेटजी, तो एक कंबाइंड स्टॉप लॉस रख के आप करिए। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ यू कैन सस्टेन द मार्केट। अदरवाइज राइट, दिस वोलेटाइल मार्केट में आपने ले लिया आज 100 रुपीस का, कल वो खुला ही 50 रुपीस पे, तो फिर क्या करेंगे। राइट। और धर्मेश भाई आपने अभी इस पे बात ही की है, मतलब टू लेग स्ट्रेटेजी, और जिस पे हमारी स्ट्रेडल की बात हुई है, राइट? आई थिंक स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल आर द मोस्ट फेमस ऑप्शन सेलर्स का स्ट्रेटेजी एंड सबकी फेवरेट होती है। एंड ज्यादातर 920 स्ट्रेडल के बारे में आपके क्या ख्याल है? और जनरली मतलब वी आर सीइंग कि 920 स्ट्रेडल के थोड़े सेलर्स जो है स्ट्रगल कर रहे हैं पास्ट फ्यू मंथ्स में, इन जनरल सिस्टम ट्रेडर्स फॉर दैट मैटर हो या कुछ हो, राइट? टू लेग स्ट्रेटेजी आपके हिसाब से कब करनी चाहिए, और वन लेग स्ट्रेटेजी जनरली जब डायरेक्शनल बेट कब लेना चाहिए? वो एक मतलब होता है ना कि आपके हिसाब से कोई थंब रूल उसमें भी कोई एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर फॉलो कर सकता है? See, first thing you need to understand is when something is known by everyone, राइट, 920 straddle हुआ, 10 o'clock straddle हुआ, these are the things which are known by everyone, सबने algos अपने बना के रखे हैं, वो करके रखा है। Now, forget about markets and think from the perspective of a institutional. I'm an institution. I want to make money. People have given me money and I want to make money. Now, राइट, how will I make money? मुझे पैसा बनाने के लिए किसी को पैसा खोना पड़ेगा।
नाउ आई नो भाई 920 स्ट्रेडल है, वो क्या करेंगे, कॉल पुट दोनों को सेल कर दिया, 25% का स्टॉप लॉस डाल दिया, आई नो दे स्टॉप लॉस वैल्यू, those stop loss are there while quite in the system. I mean, you can see them and you can easily assume 20-25% या 30% ज्यादा कोई stop loss नहीं रखेगा based on basic risk management. And what typically happens is as soon as you put the trade, immediately market starting के 15 मिनट में इतना ऊपर नीचे कर देते हैं कि दोनों साइड के आपका stop loss खा जाते हैं. And by that time most of the systematic traders are they don't trade more than 2 to 3 times in a day, or very eventually the money is lost. Now it doesn't mean that it will happen every time, but this is how market behaves. At certain point of time, they will hit your stop loss multiple times. They will try to discourage you, strategy bakwas, and you move on to something like that. But if your risk management is quite strong, you can make money out of it. But having said that, कि 920 जो स्ट्रेटेजी बहुत लोग करते हैं, तो ट्राई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज बिकॉज उसमें स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज्यादा होती है. राइट राइट. और टिपिकली आजकल हम लोग देख रहे हैं कि मूव्स MWV हर टाइप के बन जाते हैं मॉर्निंग के अंदर ही. आई थिंक मल्टीपल एंट्रीज. Correct, that is stop loss hunting because now machines are trading, machine doesn't have brains. Right. उनको तो जो बोल राइट, तो अगर वो चीज करनी है तो फिर दे आर बाउंड, स्टॉप लॉसेस आर देयर इन द सिस्टम, सबका रिस्क मैनेजमेंट है. इफ आई नो आई सी, आई मीन there are people who know what is there in the system, कहाँ पे stop losses है, क्या है. There is nothing hidden from those kind of people. So when these kind of things are known, when something is so obvious, there is no point of doing it. Try to market है, market में price action को समझिए, time को समझिए, you develop your own strategies, then you will gain that confidence and conviction. वो जो सब कर रहे हैं उसमें क्या पैसा, उसमें कोई पैसा नहीं बनने वाला. That is so true. मतलब आजकल क्या होता है कि कोई एक स्ट्रेटेजी फेमस हो जाती है एंड सब ब्लाइंडली फॉलो करने रहते हैं, बैक टेस्ट करते हैं स्टॉक में क्या कोई भी वेबसाइट पे एंड या पैसे नहीं कमा सकता ना. It becomes a crowded trade. Right. When something is very crowded, then it's very easy. Market moves in the the least resistance. जिस जगह जहाँ पे सबसे कम रेजिस्टेंस है वहां पे मार्केट मूव करेगा, वरना नहीं करेगा. राइट. तो दैट इज द मोस्ट इजी पार्ट. तो आप ऐसा नहीं करें कि जो सबसे ज्यादा फेमस है, आप जो सबसे दिस वर्क्स इन अ नॉर्मल लाइफ, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट डजंट वर्क. जो सबसे इजी है, जहाँ पे इजी मनी दिख रही है वहां पर पैसा नहीं कमा सकते. सही बात है. दैट इज सो ट्रू. एंड मतलब कैसा होता है कि टिपिकली उसमें भी मार्केट का फेज रहता है, राइट. आई थिंक कि 3-4 महीना रिटर्न नहीं यहाँ बना तो रिटेल ट्रेडर क्विट कर देगा या मतलब सिस्टम को फाइन ट्यून नहीं करेगा और फिर वो स्ट्रेटेजी वापस काम करना चालू कर देती है, राइट. दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स. सो या every person has cycles, every individual has cycles. The trick is to decode those cycles, and trick is to be in the system for long so that when the next opportunity arises, you are there as a part of that move. ओके. सो हमारा और एक ऑडियंस से क्वेश्चन है. आई थिंक हाउ डू यू कंसीडर एफएनओ इंडिकेटर्स फॉर इनिशिएटिंग अ ट्रेड. सो आई एम नॉट श्योर बट या. सो बेसिकली आई थिंक आपके कौन से इंडिकेटर्स आप पर्सनली यूज करते हैं. आई थिंक आपने एक वीवैप तो मेंशन किया ही था. आई थिंक वो सबसे ये है. हाँ, देखिए इंडिकेटर्स में हम टिपिकली देयर आर टू काइंड ऑफ थिंग. आप गामा, डेल्टा, फलाना, डीग्रा वो देखें. वी जनरली गो विद प्राइस एंड टाइम एक्शन. तो जहाँ पे हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं हम उनको फोकस करते हैं, बिकॉज अंडरलाइनिंग को समझ लिया तो फिर जो ऑप्शंस का आप समझ नहीं पाएंगे. पर फॉर समथिंग यू लुक एट पीसीआर. इफ यू रियली वांट टू लुक एट पीसीआर, देख लीजिए 0.7 से 1.2 के बीच में होना चाहिए. उसके बीच में जनरली रेंज बाउंड रहता है, वरना एक ट्रेंडिंग मोड रहता है. एंड देन typically at the start of the day look at the suppose you are trading in nifty की भी total active calls ज्यादा ट्रेड हो रही है, ज्यादा पुट्स किस साइड हुआ है, ज्यादा है. जनरली आई वुड से 60 to 70% ऑफ द टाइम मार्केट उससे डायरेक्शन ले लेता है. सपोज पुट साइड में वही जाता है तो जनरली मार्केट नीचे की साइड मतलब ऊपर की साइड जाएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्शन राइटर्स और इंस्टीट्यूशन वंस. तो बड़े ट्रेडर्स अगर एक साइड अपना ज्यादा वही बना रहे हैं तो आप दूसरी साइड जा सकते हैं. एंड देन यू कैन सी द स्ट्रैडल चार्ट आल्सो. अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है विच टिपिकली यू कैन सी ऑन हाई चार्ट्स एंड गो चार्टिंग साइट्स. वहां पे आप डायरेक्ट जो भी आपका स्ट्रैडल है उसका चार्ट बना के देख सकते हैं. एंड या दीज आर द थ्री थिंग्स. बट जनरली आप प्राइस को समझिए, मार्केट क्या करना चाहता है. इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट is the next move of Nifty, then trading options, at least you know the direction. So option rated के लिए easy होता है, option buyer के लिए तो जैसा मैंने बोला, timing is the most important thing. Right. So I think भाव भगवान है जो सबसे फेमस सेइंग है. उसके साथ में आप इंडिकेटर्स को यूज करें तो आपका सेटअप बेटर हो सकता है, बट अल्टीमेटली प्राइस एक्शन एंड आपके सेटअप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट. सो या ओके परफेक्ट.
सो अभी बात करते हैं, ये देखिए हम सब बात कर रहे हैं कि पैसा कैसे कमाएं सब, और हम रिस्क कैसे मैनेज करें, बट अब बात करते हैं हिडन रिस्क के बारे में, राइट? जो आपके हिसाब से हिडन रिस्क क्या है, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, और आपके थॉट्स क्या फ्लैश क्रैश के ऊपर, जो मतलब आज तक मतलब अभी रिसेंटली हमने कभी देखा नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि पास में इंटरनेशनल मार्केट में हुए हुए, राइट? मतलब कुछ मिनट्स में आई थिंक 5 to 7 10% का करेक्शन आ जाता है, या दोनों साइड हो सकता है, राइट? या निर्मला सीतारमन कैंडल है विच इज वेरी फेमस इन द मार्केट, राइट? सो ये सब चीजों से, या ब्लैक स्वॉन इवेंट्स या मिनी ब्लैक स्वॉन इवेंट्स से एक ट्रेडर कैसे बच सकता है, और आपके हिसाब से और कौन से रिस्क है जो डेरिवेटिव ट्रेडर को इंट्राडे बेसिस पे कंसिडर करने चाहिए? देखिए, ब्लैक स्वन इवेंट्स आर पार्ट ऑफ द financial markets. राइट। They have happened, they will happen, and they will keep happening. Black Swan event, 24th Feb last year was a Black Swan event. You know, जब रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया था, नेक्स्ट वी ओपन a huge gap down. So इस ऐसे इवेंट्स में देखिए, जब आपका हेज होगा, आपके स्प्रेड्स होंगे, तो आप बच सकते हैं. यू विल नॉट गो all out. Jesse Adani Enterprises also a black swan event. You can never, I mean, at least an index stock going more than 50% down in matter of few days, that's also considered as a black swan event. राइट। अभी they will keep happening, उसको तो कोई रोक नहीं सकता. They are part of the financial markets. और कई बार आपको benefit भी मिलेगा उससे. You know, if you are on the right side of the direction. But having said that, इतना ही overnight risk ले जाइए आप कि भाई आप उस रिस्क को मैनेज कर सकें. अब जो ब्लैक स्वन इवेंट, जो फ्लैश क्रैशेस की आप बात कर रहे हैं, देखिए दैट आर थिंग्स व्हिच एक्सचेंज इज एक्टिवली वर्किंग ऑन. एंड अगर उस साइड हम रॉन्ग साइड चले जाते हैं, तो यू नो दैट इज द रिस्क, दैट इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. तो वो तो कभी कभार अगर हमें मार्केट को देनी पड़ती है, उसमें कुछ भी नहीं कर सकता. यू द ओनली थिंग इज यू हैज योरसेल्फ. एटलीस्ट आपको बड़ा लॉस से आप बच जाएंगे. यू नो योर रिस्क बिफोर हैंड. अगर आप नेकेड लेके चलेंगे तो फिर डेफिनेटली यू नो, अगर इवेंट हैपेंस अगेंस्ट यू, देन डेफिनेटली you know, you can take that big hit on the market. I mean, last time the crude negative was, the brokers also took a big hit. I think राइट। I was reading some 40 crore hit. So that is part and parcel of the market. अगर market पैसे देगा तो थोड़ा लेगा भी. Now second thing is how broker के साथ भी, जैसे brokers, आपके brokers काम करना बंद होता है, उनका terminals काम करना बंद होता है, तो always have a backup broker जहाँ पे आप थोड़ा amount उधर भी रखें, तो at least you can create a, अगर आप long side you know, with X broker है, that broker stops working, at least on Y you can create a short positions, and you can, you know, at least offset few of your losses if and when they happen. So yeah, these are the risks, and the most important risk is to, you know, make sure that you are in a good mental health, because you know, these are the risks which are not in your control, but mental health is something which is in your control. A lot of people get frustrated because of these volatile moves, and they take some, you know, hero या zero वाला positions कि आज तो हरे पार वाला होगा तो hero ही बनेंगे, zero ही बनते हैं, very few will become hero. So you know, avoid that kind of mindset, then things will definitely you know, हम मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे लॉन्ग रन के लिए. लॉन्ग रन में कोई भी रीजन से सस्टेन कर दिया तो आगे पीछे पैसा तो बन ही जाएगा. दैट इज सो ट्रू. इनफैक्ट आप जो बात कर रहे थे ब्रोकर बंद हो जाएगा, बैकअप, इनफैक्ट कल की फिन निफ्टी एक्सपायरी में मेरा ब्रोकर सुबह 9:20 को बंद हो गया था और मतलब मेरे ऑर्डर्स नहीं जा रहे थे. लकीली मतलब मेरा बैकअप था, मतलब लकीली इट स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर फ्यू मिनट्स और मैं अपने पोजीशंस एग्जिट कर पाया था. बट आई गेट इट कि मतलब जो रिस्क एटलीस्ट हमारे कंट्रोल में, आप स्प्रेड में रख रहे हो या रिस्क डिफाइंड रख रहे हो, राइट? तो यू विल नो कि आपका लॉस कितना होने वाला है, एंड वो एक्सेप्टेबल होगा. नेकेड अगर हम लोग कंप्लीटली करते हैं इवन फॉर इंट्राडे, सो वी डोंट नो द रिस्क, एंड हम एक ही दिन में अकाउंट ब्लो अप कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज अमेजिंग, अमेजिंग इनसाइट्स. सो चलिए हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे जाते हैं. तो हम देखते हैं कि आपके हिसाब से लाइव मार्केट के अंदर ऐसे कि सो आपका मतलब मैंने ऑनेस्टली देखा कि आप इंटरनेशनल मार्केट्स में भी बहुत अच्छा ट्रैकिंग करते हैं ना, एनालिसिस करते हैं. आपके हिसाब से इंटरडे बेसिस पे ऐसे कौन से डेटा पॉइंट्स है, जैसे यूरोपियन मार्केट्स खुलते हैं अराउंड 1-1:30 बजे, या मतलब बॉन्ड यील्ड होती है, लोग 10 चीजें बात करते हैं, इंटरडे बेसिस पे आपके हिसाब से इंडियन मार्केट में टिपिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी पे कौन सी चीजें से मतलब बोलते हैं ना कि हमें देखनी चाहिए एज ट्रेडर, जिससे हम लोग को प्राइस का डायरेक्शन मिले, या ऐसे कौन से डेटा पॉइंट्स जो हमने मतलब हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन के लिए? जैसे काफी जन डाउ फ्यूचर्स वो सब भी मतलब काफी देखते हैं, बॉन्ड डील देखते हैं, राइट? आपके सबसे बेस्ट लॉजिकल सेंस और आपके पास्ट एक्सपीरियंस में क्या चीज ने आपको हेल्प की है? देखिए, डाउ फ्यूचर्स को देखना, एचडीएक्स निफ्टी को देखना, यू नो, डॉलर इंडेक्स को देखना, यू नो, ये सब चीजें, you're flooding your mind with lot of information, right?
एज ए टिपिकल ट्रेडर, इफ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, अपना प्राइस देखो. अगर डाउ फ्यूचर नेगेटिव पॉजिटिव, अभी आई थिंक 2-3 days बिफोर डाउ फ्यूचर्स वर इन पॉजिटिव, बट निफ्टी वाज इन रेड, वो लास्ट मोमेंट पे रिकवर किया था. तो आप जितना कम इन चीजों पे ध्यान देंगे, सी फर्स्ट यू नीड टू क्लियरली डिफाइन वेदर यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर और एन एनालिस्ट. अगर एनालिस्ट हो तो फिर डाउ जोन्स को देखो, नैस्डैक को देखो, डॉलर इंडेक्स को देखो, बॉन्ड यील्ड्स को देखो, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स. अगर मार्केट गिरेगा फिर कोई रीजन आएगा बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए इसलिए गिर गया, तो मार्केट गिरने से पहले तैयार रहना पड़ता है हमें उसके लिए कि व्हाट कैन हैपन एंड हाउ विल आई particularly go with that particular move. So if you are an intraday trader, focus on a pattern, focus on a chart setup, and that is more than enough. You don't have to break your head with what is happening with Dow Jones. लोग रात रात भर जग के डाउ जोन्स देखते हैं और सुबह जब एज ए ट्रेडर यू नीड टू हैव एटलीस्ट 8 to 9-10 hours of sound sleep. Right. आप उधर देखते हैं, you watch what dollar index is doing, what USD INR is doing. It really doesn't matter. You are trading in निफ्टी पे फोकस करो. यू कैन इजीली स्कैल्प 20-30 पॉइंट्स इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर. उसका काम किया है, दैट्स मोर देन एनफ. व्हाई यू वांट टू ब्रेक योर हेड विद ऑल ऑफ दीस थिंग्स. बट हैविंग सेड दैट, अगर फिर भी कोई देखना चाहता है तो डॉलर इंडेक्स को देख लीजिए एंड लुक एट यूरोपियंस में डेक्स इंडेक्स इज क्वाइट ए गुड इंडिकेटर. And then bond yields को आप देखना चाहें तो देख सकते हैं. I think these are three are more than enough. Rest all is there in the price. You if you can sense the price, then there is nothing else which you need to look at. So रमेश भाई, उसमें भी आप आपने जैसे ये दो तीन चीज बताई, डॉलर इंडेक्स हो गया, सो इसको कोरिलेट कैसे करना चाहिए? मतलब सिंपल में आप खाली बता पाए कि बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है या डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है, तो उसका मतलब क्या हुआ हमारा ऑडियंस? राइट. Dollar index is generally negative for equities. Dollar index is considered as the safe haven. Okay. Which typically says that US government will never default on its obligations. So dollar index में अगर पैसा जा रहा है, means money is moving from a riskier assets to a safe haven, which is dollar index, where you can get a typical return of whatever जो भी आपकी US bond yields के हिसाब से भी 4-5 जो भी चल रहा है उसके हिसाब से मिल जाएगा. पर अभी डॉलर इंडेक्स 105 से 103 आ गया. अभी वेरी टिपिकल. सी दिस कोरिलेशंस विल कीप हैपनिंग, कीप डजंट हैपन. अभी ऐसा बोला जाता था कि भाई डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ता है तो इंडियन करेंसी भी बढ़ती है, यूएसडी एनआर आल्सो गोस अप. Now dollar index almost hit 110. The USD was at 83 at that point of time. Now dollar index from 110, 111 is back to 102, 103. But USD INR is again moving in that 83 range only. मतलब कुछ भी नहीं हुआ. तो ये कोरिलेशन कभी बनता है कभी नहीं बनता. तो टिपिकली यू कैन नॉट जस्ट से कि ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा. जनरलाइज नहीं कर सकते. राइट. जनरलाइज नहीं कर सकते. You so that cycles you need to understand. Now instead of wasting your head when, and these are all required when you are an institutional trader, when you are trading with quite a huge amount of money. अगर आप 3-4 लाख से काम कर रहे हो, अपने सेटअप पे काम करो, whatever you follow, make a money and avoid doing over trading. You can easily live a very peaceful life. Right. That makes so much sense, Ramesh bhai. So चलिए, आई थिंक अभी मेन क्वेश्चन, अभी हमारा एक लास्ट क्वेश्चन जो काफी टिपिकली हमें उठ के आ रहा है कि वी आर सीइंग कि आजकल रिटेल पीपल भी काफी एल्गो ट्रेडिंग की तरफ चले जा रहे हैं. एक तरफ है इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स है, एचएफटीज है, जिनके तो मतलब सर्वर तक, मतलब वो एनएससी के सर्वर के अंदर उन्होंने अपना को लोकेशन वो सब सेटअप करके रखा है. राइट. और दूसरे तरफ हमारे नॉर्मल रिटेलर्स है जो काफी बैक टेस्टिंग करके, फ्रंट टेस्टिंग करके, मतलब डेटा करके अपने एल्गोरिथम्स डिप्लॉय कर रहे हैं. उसके अंदर क्या हो रहा है कि वी आर सीइंग इंट्राडे में, जैसे आज से 1-1.5 साल पहले मूव्स इतने रैंडम नहीं होते थे. मतलब जो आप जैसे बता रहे थे, हमारी 920 स्ट्रेडल या ये सब चीजों को लेके बात हो रही थी. राइट. रैंडम मूवमेंट्स आ रहे हैं और आप जो बोल रहे थे कि काफी जन जब फॉलो करते हैं तो वो क्राउडेड स्पेस हो जाता है. सो बट वी आर सीइंग कि इंट्राडे में टिपिकली 5 मिनट 3 मिनट के कैंडल्स भी बहुत ही रैंडम बन रहे हैं. मतलब ऊपर साइड पे स्पाइक, मतलब सारे एसएल सेट होंगे, 3 मिनट में नीचे साइड के सारे एसएल सेट होंगे और मार्केट वापस आ जाएगा. राइट. सो एक रिटेल इंडिविजुअल जिसके पास, मतलब बोलते हैं ना, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी नहीं है, या तो मतलब बोलते हैं ना, क्या चीजें कर सकता है जिससे वो डीक्लटर कर पाए ये नॉइस और अपने पोजीशन को होल्ड कर पाए? देखिए, उसके लिए आपको सबसे पहली चीज है कि भाई अगर आप बोले 5 मिनट में इतना स्पाइक्स हो रहा है तो उस इंस्ट्रूमेंट अगर आपको फिर भी बैंक निफ्टी में करना है तो इंक्रीज द टाइम होराइजन फ्रॉम 5 to 15 minutes. So as you increase the horizon, the signals will come less and the volatility or the whipsaws will start going lesser and lesser. अगर typical retail trader है तो 1 hour chart is the best. वहाँ पे आपको noise बहुत कम हो जाती है. It definitely gives you late signal, but the quality of the signals are quite good. बट अभी उसमें आप फिर ऑप्शंस में आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है. वन थिंग विच आई हैव ऑब्जर्व्ड इन लास्ट 2 to 3 years,
ऑप्शन स्पेस में लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई है. आई मीन स्पेशली इन इंडेक्स ऑप्शन, people are spending so much time and energy on that, and they're missing very good trades which are coming in cash market, Right, right? right. So you need to have that kind of balance also. The cash market में बहुत सारे stocks from, at least in SME space, I've seen so many stocks going from 100 to 300, 400, 3x, 4x in matter of few months. But you keep breaking your head with options, and जब भी जो crowded space हो जाता है, जो 920 straddles and all that, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होती है. तो इसलिए कैश पे भी फोकस करिए. बट टिपिकली फॉर ऑप्शंस आई वुड सजेस्ट यू इज यू इंक्रीज योर टाइम होराइजन इंक्रीज करेंगे तो ये विपसॉस आपके कम हो जाएंगे. Definitely the signals, quality of signals will improve, and the signals will typically come less, but you will start avoiding these kind of whipsaws. राइट राइट राइट, दैट इज सच अ ब्यूटीफुल आंसर. इनफैक्ट जैसे आपका टाइम फ्रेम चेंज होता है वैसे ही आपकी नॉइस कम होती रहती है, राइट? मतलब आप 5 मिनट से 15 मिनट में आओ, 1 घंटे में आओ, 1 डे में आओ, 1 वीक में, सो आपको उतनी ही स्ट्रॉन्ग सेटअप्स है, उतनी ही आपका मतलब होल्डिंग होराइजन जितना है उस हिसाब से यू आर एबल टू सी. एंड आपने और एक चीज बहुत अच्छी बताई कि कैश मार्केट में लोग काफी बार अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते खाली डेरिवेटिव्स के चक्कर में. तो जैसे आप टाइम फ्रेम इंक्रीज करते हैं, आई थिंक कैश मार्केट में भी यू कैन फाइंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड यू आर able to utilize, right? So Ramesh bhai, I think अभी ऑडियंस से हमारे थोड़े बहुत क्वेश्चंस आए. we'll quickly try to take 1 2 good questions and हम लोग फिर रैप करते हैं, ठीक है? Just a second, so I'll just have a look. So कमल का आई थिंक क्वेश्चन है, which indicator works best in intraday market? So I think for intraday, I think बेस्ट इंडिकेटर आपने आई थिंक एक वीवेब तो हमने ऑलरेडी आई थिंक डिस्कस किया हुआ है. उसके अलावा आई थिंक कोई भी बेस्ट इंडिकेटर आपने देखा है जिससे, या तो आप वीवेब के साथ जो चीज यूज करते हो मे बी एडिशनल. देखिए, from me personally, I don't use any indicator. I generally look at plain charts with certain levels marked on the system to avoid ओके. any noise. But if you are a new trader, I think ADX is a good indicator where you can, where you can get some clarity. Just read some tutorials on ADX, which is quite good. As per me, at least वो sideways और trending market में आपको clarity दे देता है. पर eventually, as you evolve as a trader, the less number of indicators you have on your screen, the better trader you will become. See, at the end of the day, जितनी कम noise होगी, जितना कम information flowing होगा, उतना आपका quality decision अच्छा होगा. राइट 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 राइट. सो आई थिंक इट्स कंक्लूज कि मतलब बेसिकली कि जितना आप ये नेकेड चार्ट्स को देख के प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर. आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं एंड आपको मतलब एट टाइम सेंस नहीं दे पाते हैं, राइट? सो एज बिगिनर यू शुड Yeah, स्टार्ट विद इंडिकेटर्स, बट आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप नेकेड चार्ट्स को अच्छे से रीड कर पाए, राइट? परफेक्ट. ओके. So I think Akash का क्वेश्चन है, which strikes should I select while buying an option? So I think हमने in the money, at the money वो सब के बारे में ऑलरेडी बात किया, बट जनरली स्ट्राइक प्राइस के टर्म्स पे मतलब कितना दूर होना चाहिए और कितना पास होना चाहिए वो आकाश भाई पूछ रहे हैं. अगर आप सी इट डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम, राइट? तो जनरली अगर सपोज आप वीकली में कर रहे हैं तो फ्राइडे एंड मंडे को यू कैन गो इन एटीएम -2 to 3 स्ट्राइक प्राइजेस. फिर आप ट्यूसडे वेडनेसडे को आ जाते तो एटीएम पे आ जाइए, और एक्सपायरी वाले दिन तो इन द मनी में ही करिए. I'm telling for a trader who is highly conservative, who don't want to blow his account. Right. So I generally follow this. परफेक्ट परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक हमारा अभिजीत से आ रहा है. सो जनरली हमने देखा जैसे फ्यूचर्स जो है नेक्स्ट 2 3 मंथ्स के लिए अवेलेबल रहता है, राइट? निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो. सो एट टाइम्स आपके हिसाब से फ्यूचर प्राइस जो है काफी बार डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे ट्रेड करता है. सो उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू तो जो बेसिक टाइम वैल्यू होती है, बट कभी कभी भी सी मतलब नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन जो है करंट पॉइंट के फ्यूचर से डिस्काउंट में होता है. वो क्या इंडिकेट करता है कुछ आपके हिसाब से? वो कभी कभी एक्सपेंसिव या मतलब अंडर प्राइस्ड क्यों होता है करंट मंथ के ऑप्शन से, मतलब फ्यूचर से? देखिए, इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है. देयर आर लॉट ऑफ रीजनिंग बिहाइंड दिस. फर्स्ट इज, अगर कोई अर्निंग सीजन है, कोई इंडेक्स स्टॉक्स ने डिविडेंड दिया तो उसका एडजस्टमेंट होगा. अब आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज बनती है. और टिपिकली ऐसा माना जाता है, जैसा दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग व्हिच इज अनकन्वेंशनल, कि अगर निफ्टी फ्यूचर्स का प्रीमियम 100 प्लस हो जाता है तो दैट इज द टाइम कि यू नीड टू स्टार्ट लाइटिंग अप. मतलब अपने लॉन्ग्स को लाइटन अप करिए, क्योंकि एक अच्छा करेक्शन आके वो बराबर कर देते हैं. राइट. और जनरली अगर डिस्काउंट में चलता है, कोविड के टाइम में जैसे डिस्काउंट में ही था, उसके बाद भी मार्केट गिरा था, पर वी आर नियर टू अ बॉटम. This is a typical understanding which I have. It doesn't work all the time. It works 60-70% of the time, but it gives you enough perspective. तो जनरली अगर 70 प्लस प्रीमियम हो जाए तो आई मीन
वेट फॉर ए सिग्नल कि जब शॉर्टिंग का हो, पर लॉन्ग्स पे अगर आप 10 लॉट में करते हो तो 3-4 लॉट में ही करिए, इज व्हाट आई जनरली टिपिकली डू। परफेक्ट परफेक्ट। सो आई थिंक हम अभी रैप करेंगे एक लास्ट क्वेश्चन के साथ में। ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, पर्सनली मुझे बहुत ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट में, बट आपके लिए क्वेश्चन है। सो सैटर्न इज अ कॉम्बस्ट, तो वो पूछ रहे हैं ये राजीव भाई, सैटर्न इज कॉम्बस्ट टिल 6 मार्च। सो वो आपके हिसाब से आयरन एंड स्टील सेक्टर राइज करेंगे क्या उसके हिसाब से, एंड सेल एंड एनएमडीसी के ऊपर उनके व्यूज बोल रहे हैं। Correct, correct. After six, Saturn is basically for any industry which takes, which includes a lot of labor. So, oil and like Vedanta, Tata Steel sale, they can see some positive traction after six. If you are going positive, then make sure that your six का जो भी low बना है उसका आप stop loss रखें. So at least if it doesn't work, you exit with a minimum loss. राइट राइट राइट। और एक क्वेश्चन हम क्विकली ले लेते हैं। हाउ डू आई स्टार्ट एक्सपायरी ट्रेडिंग, विच इंडेक्स शुड आई चूज, एंड व्हाट शुड बी a conservative target? I make around 0.3% on expiry. I want to increase it to 0.5% or more. ये अंकित से क्वेश्चन है। सो एक एक्सपायरी ट्रेडर बेसिकली जो स्टार्ट करना चाहता है, कैसे स्टार्ट करना चाहिए? अगर वो 0.3% के आसपास मतलब रिटर्न कमा रहे हैं बट थोड़ा हाई रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, उनके लिए आपका बेस्ट क्या रिकमेंडेशन? अगर आपको रिटर्न्स को थोड़ा बढ़ाना है तो आपको रिस्क को इम्प्रूव इंक्रीज करना पड़ेगा। राइट तो मोस्टली आई फील दैट मिस्टर अंकित जी जनरली ओटीएम में करते हैं, तो उनको थोड़ा स्ट्राइक प्राइस पास आना पड़ेगा, इसमें प्रीमियम ज्यादा मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपकी रिस्क बढ़ेगी, पर आपका रिवॉर्ड भी बढ़ सकता है, उसी हिसाब से आपका रिवॉर्ड बढ़ेगा। राइट राइट राइट। बेसिकली क्लोजर डेल्टास में आपको आना पड़ेगा, जिसके साथ आपका रिस्क भी बढ़ेगा बट रिवॉर्ड भी बढ़ेगा। मतलब आप 5 का प्रीमियम बेच रहे तो आपको 7-8 रुपए के बेचने पड़ेंगे, या तो आप खरीद रहे तो आपको वैसा करना पड़ेगा, राइट? वाइस वर्सा दोनों केसेस में। रिवॉर्ड्स को बढ़ाना, आई मीन दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, रिवॉर्ड्स बढ़ाने हैं तो तो रिस्क रिस्क को आपको थोड़ा बढ़ाना बनाना पड़ेगा, या तो मार्केट के पास देयर में आर नो आना फ्री पड़ेगा सिंपल टर्म्स पे। राइट राइट राइट। देयर आर नो फ्री लंचेस इन द मार्केट। That's so amazing, Ramesh bhai. So I think this is a wrap on second episode of Every Day Can Be a Payday of Paytm Money. The option is your webinar. So thank you so much, Neeraj. Over to you. All Yeah. right. Thank you, Aditya, and thank you, Bramesh. It's a wonderful, wonderful session from both of you. Yeah, Aditya, you have really hosted it so nicely, and Bramesh, the kind of insight that you have given, I'm sure everybody got tremendously benefited. So, I'd like to thank all the panel members and listeners who joined today's session. We have 3 more sessions in the pipeline that will help you to get answers on different aspects of option trading. So see you on the third session that's happening on Friday, 3rd March. And also follow us and keep watching this space for more information. So thank you, everyone. Goodbye. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank Thank you, you, everyone. everyone. Thank